Hello everyone, welcome to another session. The solar system रो previous video रे हमें बहुत सारा topic cover कर देइथिले. आ गोटे रहि जाइछि planets and moons सेटा हमें आज रो सेशन रे देखिबा. ता पूर्वरो गोटे क्विक रिवीजन करि दबा previous class रे जहा भी हमें पढ़थिले. तो फर्स्ट देखिबा origin of universe रो theory होछि Big Bang theory given by George Lamate in 1931. Age of universe 13.8 billion years. Solar system रो theory is nebula theory given by Immanuel Kant and Laplace. Immanuel Kant 1755 रे theory को propose करथिले. Laplace आको 1796 रे modify करथिले. Okay. Age of solar system 4.6 billion years. Then देखिबा कि celestial bodies. Basically दीटा टाइप रो celestial bodies थांती luminous और non luminous हमें डिस्कस करथिले. Luminous होछि जार आलोक थाए self glowing like stars. Non-luminous होचंती planets, satellite, meteors, asteroids जहाँ भी हमारे solar system रे और outside of solar system जहाँ भी रहले जो मानकर निजर आलोक नहीं से माने होचंती non-luminous. Okay. Next होची asteroid found between Mars and Jupiter. सबुठ largest asteroid ना होची Ceres जोटा को हमें गोटे dwarf planet हिसाब रे मध्य consider करिचे. Meteoroids and meteorites भितर मु डिफरेंस कहिथिली. Meteoroids होची rock in the space. Meteors होची जो rock टा space रु अर्थ atmosphere भितर को आसी जाए और सेटा जळिया लागि थाए, that is meteors. Meteorites होची जो meteors टा completely जळि न पार के अर्थ सरफेस रे पड़ जाए, सेटा होची meteors. Comets हम देखथिले, these are icy bodies. Comets रो टेल टा सब बेले सन रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे रहइबो. एस्टेरॉयड बेल्ट देखा जाए मार्स और जुपिटर मध्य रे. कुइपर बेल्ट देखा जाए नेपच्यून परे. और एस्टेरॉयड बेल्ट होची एस्टेरॉयड मानकर सोर्स. सेमती कॉमेट्स रो सोर्स होची कुइपर बेल्ट. ओके. प्रोक्सिमा सेंचुरी हमरो क्लोजेस्ट स्टार टू सन. देन सन विषय किछि फैक्ट देखिबा. Composition 73% hydrogen, 25% helium. Energy mainly comes from nuclear fusion. Outer layer को कहा जाए कोरोना. आउ visible surface जोटा हमें अर्थ रो जोटा देखि पारो सेटा को कहा जाए photosphere. ओके. एबे देखिबा हमें आज रो सेशन planets and moons. तो planets को हमें दीटा टाइप रे कैटेगराइज करि छे. Inner planet also known as terrestrial planet जो माने होचंती Mercury, Venus, Earth and Mars. Characteristics हो जे मानकर ए माने साइज रे छोटो, rocky planets, dense माने मानकर density अधिक थाए. ए मानकर either atmosphere न थाए और थिले बहुत thin atmosphere थाए. और satellite either कम थाए और न थाए, जेमति कि हमरा Mercury और Venus रो गोटे भी सैटेलाइट नाही. अर्थ पाखरे आपण माने जानि जंती मून अछि और मार्स पाखरे दीटा सैटेलाइट और मून्स. नेक्स्ट देखिबा आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स. दीज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. एमानकर साइज बहुत बड़ थाए. जनरली एमान को गैस जायंट बोली कहा जाए. दीज आर मेड अप ऑफ गैस और आइस. एटमॉस्फेयर एमानकर बहुत थिक थाए बट एमानकर डेंसिटी बहुत कम. ओके. एमानकर चारिपटरे रिंग्स देखा जाए. कोठी डेंस रिंग्स देखा जाए जेमते कि सैटर्न रे, बट जुपिटर रे रिंग्स थाए बट दैट इज वेरी थिन. तो सेमती सैटेलाइट भी बहुत देखा जाती. आम ये सब धीरे धीरे आगो को पढ़िबा. देन आपण माननको पई एठी गोटे ट्रिक अछि प्लैनेट मानको सीरियली मन रखिबा पई. माने सन टू क्लोजेस्ट और फारदेस्ट हिसाब रे सीरियली अछि. माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके. सो एटा होची नॉर्मल अरेंजमेंट. देन साइज हिसाब रे देखिले सबुठू साइज रे बड़ रहिबो हमर के ना जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी. आपण मन देखथिबे आउटर प्लैनेट रो जोटा नॉर्मल ऑर्डर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून
सेम ऑर्डर होची सेमानकर साइज रे भी टेरेस्ट्रियल प्लानेट रे सबुठू बड़ साइज रोचे हमर अर्थ रो देन वीनस मार्स एंड मर्क्यूरी मर्क्यूरी तो सबुठू स्मॉलेस्ट प्लानेट सूर्य पाखर देखा जाए अर्थ और वेनस को ट्विन्स बोली कहते ट्विन प्लानेट माने सेमानकर मास और डेंसिटी पाखापाखि सम बट अर्थ रो साइज वीनस टू अधिक रोचे ऑर्डर ऑफ प्लानेट को सीरियली मन रखिए ये आ गोटे ट्रिक अच्छी जर्नी स्टार्ट्स अप नॉर्थ एवरी विजिट मेक्स मेमोरीज ओके नेक्स्ट आम गोटे गोटे प्लानेट मान विषय रे डिटेल रे देखिबा फर्स्ट मर्क्यूरी सबुठू छोट प्लानेट क्लोजेस्ट टू सन एटमॉस्फेयर नहीं एठी सैटेलाइट भी नहीं अर्थ रे 88 डेज हेले मर्क्यूरी रे गोटे वर्ष हो जिवो ओके आ एटा होची फास्टेस्ट प्लानेट माने सूर्य चारिपटे बहुत जल्दी जल्दी एटा तार रिवोल्यूशन कंप्लीट करे देन देखिबा वीनस हॉटेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम कहीं CO2 कंसंट्रेशन बहुत मात्रा रे थाए अर्थ ट्विन कह जाए बिकॉज ऑफ सिमिलर मास एंड साइज बट मन रखिए अर्थ साइज वीनस टू अधिक ब्राइटेस्ट प्लानेट विजिबल एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार रेट्रोग्रेड रोटेशन माने क्लॉकवाइज रोटेशन ये मुझे गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट कहबी आमर जिते सोलार सिस्टम सृष्टि है लाइक जिते नेबुला घूरुला आउ कंटिन्यूअसली बहुत स्पीड रे घूरवा फल से गोटे डिस्क सेप स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट हो गला तार सेंट्रल मासटा आमर सन बनीगला बाकी जहाँ भी सब रहिले से माने प्लानेट एस्टेरॉयड मेटिओर्स जहाँ भी सब बनीगले एबे से नेबुला जो डायरेक्शन रे घूरुथिला आमर पूरा सोलार सिस्टम रे जहाँ भी सब प्लानेट अछंती इवन सन समस्ते सेम डायरेक्शन रे घूरंती सेटा को कहा जाय कि प्रोग्रेड रोटेशन एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट मन रखु सबू प्लानेट और सन डायरेक्शन प्रोग्रेड थिबा बेले ओनली वीनस एंड यूरेनस रो डायरेक्शन रेट्रोग्रेड माने माने क्लॉकवाइज रोटेशन करती जते बेले कि सूर्य आउ सबू जाक ग्रह उपग्रह से माने कौन करती ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती तो कहुए प्रोग्रेड रोटेशन माने ओरिजिन ऑफ सोलार सिस्टम माने सोलार सिस्टम आरंभ रे रोटेशन जमती थिला ए पर्यंत सेम डायरेक्शन रे से माने रोटेट करूछंती बट दीज टू आर एक्सेप्शन वीनस एंड यूरेनस सो दिस इज रेट्रोग्रेड रोटेशन मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन यार गोटे भी सैटेलाइट नहीं 225 दिन वीनस रे हेले अर्थ रे गोटे ईयर हो जाए नेक्स्ट प्लानेट अर्थ दिस इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट और टेरेस्ट्रियल प्लानेट भितर सबुठ बड़ ओनली प्लानेट विथ लिक्विड वाटर एंड लाइफ ब्लू प्लानेट कह जाए 70% वाटर थाए प्लानेट एक्सिस टिल्ट होची 23.5 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस ओनली आम एक्सपीरियंस करूचे डिफरेंट सीजन्स ओके यार रोटेशन होची प्रोग्रेड गोटे सैटेलाइट द मून 365.25 डेज हेले हमरो गोटे ईयर होची नेक्स्ट प्लानेट इज मार्स रेड प्लानेट भी कह जाए बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड डस्ट एटमॉस्फेयर थिन दीटा सैटेलाइट फोवस एंड डीमस लार्जेस्ट वोल्केनो देखा जाए और टॉलेस्ट माउंटेन देखा जाए दैट इज कॉल्ड ओलंपस मॉन्स माने पूरा सोलर सिस्टम रो लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन मार्स रे देखा जाए पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट वाटर अर्थ रो 687 डेज हेले मार्स रे गोटे ईयर होची ओके नेक्स्ट प्लानेट इज जुपिटर दिस इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम एटमॉस्फेयर हैज हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर गैसेस शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड माने 10 आवर्स रे सेता निजे चारिपटे बुली जाय थाए हैज ग्रेट रेड स्पॉट दैट इज कॉल्ड जायंट स्टॉर्म स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड थाए जुपिटर रो 95 मून्स 95 टा सैटेलाइट रोची सबुठ लार्जेस्ट सैटेलाइट रो नेम होची गैनीमेड ओके गैनीमेड रो साइज टा मर्क्यूरी ठू भी बड़ थाए इट हैज अनक्लियर रिंग अराउंड इट 11.86 earth years is equal to 1 year in Jupiter. Saturn is second largest planet in our solar system. This is the least dense planet. हाँ आ गोटे जिनस अर्थ रो डेंसिटी सबुठ अधिक प्लानेट मानक भितर सबुठ कम डेंसिटी होची सैटर्न रो माने एते कम डेंसिटी कि आपण जदि सैटर्न को पानी रे भसई देबे से भासीबो बुडीबनी बिकॉज वाटर रो डेंसिटी टू भी
लेस डेंसिटी होची Saturn रो. Saturn is known for its spectacular rings that is made up of gas, ice and dust. 145 moons. सबुठु अधिक सैटेलाइट थिबा प्लैनेट होची Saturn. Triton is the biggest and it is having a thick atmosphere around it. 29.5 earth years हेले Saturn रे गोटे ईयर होची. ह्यूजेन्स डिस्कवर करथिले Saturn रा रिंग को 1655 रे. That is all about Saturn. Next planet is Uranus. This is also called as ice giant. This looks bluish or greenish due to presence of methane. This is the coldest planet. It rotates clockwise like Venus. माने याको कौन माने यार रोटेशन होची retrograde. Rotates sidewise, also called as rolling planet. यार tilt मन रखिबो 98 degree tilt रहउची जोति पई के से कोन एमती रोल करी माने साइड वाइज से रोटेट करूची और रोलिंग प्लैनेट को हाउची एको. 27 satellites, 84 earth years equal to 1 year in Uranus. Next planet is Neptune. This is the farthest planet. This looks bluish color due to presence of methane. Extremely strong wind देखा जाए Neptune रे. 14 satellites. Triton is largest. Confuse हेबनी. Saturn रा largest satellite रा ना होची Titan. Neptune रा largest satellite is Triton. Okay, 165 years. यार्थ रे हेले 1 year होची Neptune रे. Neptune is the only planet which was discovered by mathematical prediction by scientist John Gale and Ewell Verrier. Okay, this is all about our planet in the solar system. एट देखंतु मु सब जगह planet रो moons आउ some key facts add कर देछि ए टेबल रे और किछि इंपोर्टेंट सैटेलाइट रो नाम मध्य लिखा है. नेक्स्ट देखिबा हमर अर्थ सैटेलाइट द मून विषय रे. This is Earth's natural satellite. This is non-luminous, but it reflects sun's light. Distance between Earth and Moon is 3,84,000 kilometers. Time taken by moonlight to reach Earth is 1.26 seconds. अच्छा सनलाइट Earth surface रे पहुँचबा को केते समय लागे आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु. Earth gravity is equal to 6 times moon's gravity. Rotation, revolution सबु moon रे same 27.3 days. moon रो only गोटे side ही हमको देखा जाए, that is called far side. Okay, एबे हमरो solar system completely सरी गला. Next session रे मु MCQ आनिबी पूरा solar system ऊपर. आपण माने ए दीटा वीडियो देखंतु देन MCQ सेशन करंतु आपनकर पूरा सोलर सिस्टम क्लियर हो जिवो. नेक्स्ट सेशन रो नोटिफिकेशन पाई आपण माने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु. देखा नेक्स्ट वीडियो रे. धन्यवाद.